Namaskar. Today we are joined by Shri Sanjay Garg, Director General of Bureau of Indian Standard. Garg साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है. Thank you. Regulators generally are considered too much paperwork, strangulator, some people call them. So what is BIS doing to make it much more easier for business to do business? What are you doing to cut the red tape that is prevalent in a lot of sectors? That is a very, very important question you have asked, and you must have heard our Honorable Prime Minister. He keeps on focusing on ease of doing business and making life for the industry easier and all that. So we have taken in the last couple of years several steps to streamline and automate the functioning of BIS. In fact, you will be surprised to know that all our operations are online. Even the market surveillance, when the person goes for inspection, it is GIS mapped. Okay. So with the longitude, latitude, coordinates, he takes its picture and upload it so that he can't fake it and all that. So we have used all kinds of technologies to facilitate this, and in terms of cutting red tape, in terms of reducing compliances, reducing inspections, also we have taken a lot of steps. Like earlier, the process was that every year somebody from the BIS will go and inspect the factory, if suppose he is a license holder. So now we have made that it will be required only once in 5 years. Okay. So human intervention, wherever it is there, we are trying to minimize it. Okay, so that it is completely trust based and online. ज़्यादातर whatever जो भी आपको information देना है, लेना है, it should be through electronic portal. Like earlier, our licenses used to be only for 1 and 2 years, mostly 1 year or 2 years. We have made it 5 years. Okay. So एक बार में ही आपको 5 साल का लाइसेंस मिल जाएगा. तो और लेकिन आपको फी 7 साल की साल देनी है. पहले ये नहीं है कि आपको 5 साल का मिला तो you have to pay fee for 5 years. तो आपके ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा. You will get license for 5 years, but you will pay fee only annually. So this is much simpler and easier. Another thing which we have done is, पहले क्या था कि जो भी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन लेती थी उसको अपने यहाँ टेस्टिंग लैब रखना पड़ता था, तो उसका कॉस्ट बढ़ता था. तो MSMEs एंड मेनली मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेड कि भाई हमारे पास तो इतना नहीं है, वी कांट अफोर्ड टू कीप ऑल दी टेस्टिंग इक्विपमेंट, वी आर स्मॉल पीपल, वी प्रोड्यूस ओनली 100 आइटम्स पर डे, हाउ कैन वी अफोर्ड टू कीप सच मशीनरी. So we have removed that requirement कि भाई आप अपना लैब मत रखो, you can get it tested outside any other laboratory. वो भी हमने requirement हटा दी. एक चीज़ और हमने की कि जैसे पहले क्या तक करता था, BIS जब लाइसेंस देता था तो BIS खुद used to prescribe कि आपको इस तरह से क्वालिटी को मेंटेन करना है, तो वो थोड़ा प्रिस्क्रिप्टिव हो जाता था. तो अभी ये हो गया कि आप हमें तो क्वालिटी चाहिए प्रोडक्ट में, आप अपना प्लान दे दीजिए. यू गिव योर ओन क्वालिटी एश्योरेंस प्लान कि भाई मैं ऐसे बनाऊंगा और ऐसे टेस्ट करूंगा. सो वी विल नॉट गिव अवर प्लान, यू गिव योर प्लान. तो इस तरह के लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशंस वी आर डूइंग इन द प्रोसेसेस. ऑनलाइन में अभी हमारे ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग इनटू ए लार्ज स्केल ऑटोमेशन, integrating all the systems like standards making, certification, hallmarking and laboratories, everything put together. And we will also use AI in that. वो हमारा अभी आ रहा है, मतलब we are just floated the RFP and that will take another 1.5 to 2 years to complete. तो उसमें we will use lot of AI and ML so that हमारा जो manpower requirement भी जो है वो हमारा काफ़ी कम हो जाएगा. लॉट ऑफ रिपीटेटिव वर्क, लॉट ऑफ लाइसेंसिंग थिंग्स, सर्विलेंस इश्यूज, those can be tackled through AI. We have probably one of the largest startup ecosystem in the country, in the world. But the startups, one of the things that they are really afraid of is the lengthy procedure, approval procedures.
will BIS do something to shorten that process for startups, and so that they're not scared for getting standards done, and the entire process can be curtailed for them to comply with? जनरली क्या होता है कि स्टार्टअप्स जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं दे आर बाय एंड लार्ज न्यू या इनोवेटिव होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उनके स्टैंडर्ड कई बार पहले से बने ही नहीं होते, क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, उसका टेस्टिंग होगा, उसका कुछ डेटा आएगा, तभी स्टैंडर्ड बन पाता है. बट हमने जो स्टार्टअप के अलावा सभी के लिए एक प्रोसेस निकाल रखा है विच वी कॉल अ सिंप्लीफाइड प्रोसेस, जिसमें हम विद इन 30 days लाइसेंस दे देते हैं. और अभी आपको मैं बताऊं, देयर आर टोटल अराउंड 1500 हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो अंडर लाइसेंसिंग हैं. उसमें से 1100 प्रोडक्ट जो हैं वो लगभग इस सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के तहत आते हैं, तो लगभग 70-80% जो है वो. और ये 30 days के अंदर देने का, इसमें 95 हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले कुछ सालों का, 95% से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो हम विद इन 30 days डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. So is it 30 days, is it a deemed approval? अगर 30 days में नहीं मिलता है तो is it a deemed approval kind of a thing? और नहीं, डीम्ड तो नहीं कर पाते, बिकॉज देखिए उसमें इश्यूज हैं, क्योंकि वी आर गिविंग ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन. अब डीम्ड कर दिया और उसका प्रोडक्ट फेल हो गया तो देन वी विल लूज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल. सो डीम्ड तो नहीं है, बट हम इसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं. मैं आई माई सेल्फ मॉनिटर इट ऑन माई डैशबोर्ड. हाँ, तो ये पूरा मैंने सिस्टम ऑनलाइन बना रखा है, पूरे मेरे डैशबोर्ड पे रहता है, पूरा ऑनलाइन है सारा. मतलब आई डोंट नीड टू टॉक टू एनीवन. सिटिंग हेयर ऑन माय डैशबोर्ड आई कैन सी कि मेरा मान लीजिए पुणे ब्रांच ऑफिस का क्या परफॉर्मेंस है, कितने लाइसेंस उन्होंने विद इन 30 days दिए हैं, कितने 30 days के बियॉन्ड दिए हैं. ये सब डेली बेसिस पे आई कैन सी इट ऑन माई डैशबोर्ड. सो आई मॉनिटर इट very regularly, and that's how we are able to maintain that 95% plus performance within 30 days. Sir, MSME economy की backbone कहलाते हैं. What is BIS doing to standardize processes for MSMEs? Is there something that you have done uniquely for them? MSMEs, as you said, is a very large segment of our industry, and we have several specific provisions for MSMEs in our process. One, we involve MSME very actively in our standard making process, because many times there is a complaint from MSMEs कि साहब जो स्टैंडर्ड बनते हैं वो लार्ज या बड़ी इंडस्ट्री को ज़्यादा केटर करते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट्स को कम केटर करते हैं. सो we have taken a conscious decision and a step that in all our technical committees which make standards, we have involved MSME industry. So that there is an inclusive process. That is number one. Number two, because MSMEs are small industries, they don't have that much of financial muscle. So in our licensing fee, in the financial provision, we have given them a concession. For micro sector, we have given 80% concession. For small, 50%. For medium, 20%. And in addition to that, for Northeast के लिए और महिलाओं के लिए additional 10%. On top of that. On top of that. So there are these fee concessions. Apart from that, we also conduct a lot of training programs for particularly MSME sector to make them aware and to make them to train them. क्योंकि जनरली जब भी कोई स्टैंडर्ड गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है तो MSME सेक्टर का ये रिप्रेजेंटेशन रहता है कि भाई हमारे पास तो उतना वेयर विदॉल नहीं है, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर पाएँ और ये सब कर पाएँ. तो हम लोग काफ़ी उसमें इनकी हैंड होल्डिंग करते हैं, तो उनका ट्रेनिंग वगैरह करते हैं. और फ़ी कंसेशन तो दिया ही हुआ है. और
उसके अलावा इनका जो लैब का, एज आई सेड कि हमने लैब का रिक्वायरमेंट भी अभी हटा दिया है। पहले ये एक बड़ा इशू रहता था कि भाई छोटे छोटे यूनिट्स कैन नॉट अफोर्ड सेपरेट टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वी हैव सेड कि यू कैन डू इट आउटसाइड, यू डोंट नीड टू मेंटेन दोज लैब्स, एंड वी आर आल्सो फंडिंग देयर laboratories. So MSMEs, you are actually doing hand-holding for MSMEs to... Yes, that is required because otherwise they will be left behind. Finally, one of the parameters for standards is also the testing laboratories. Yeah. What is the testing laboratories infrastructure that you have created so far, and how do you plan to expand it and ensure that there is enough infrastructure available in this country to test the products that are being made now? It's a backbone actually. Testing laboratory or testing infrastructure is the backbone of the entire BIS operation. I would say it works in the back end, but the whole activity depends on that. तो हमारे BIS के तो 10 लैब हैं जो बड़े, they are quite reasonably large labs, but एक पॉलिसी डिसीजन कह लीजिए या एक इन प्रिंसिपल डिसीजन हुआ था कुछ पहले कोई BIS अपने यहाँ लैब को एक्सपेंड ना करके BIS will promote private sector in the lab. So we have done that, and now I can say in last 3-4 years this lab network has expanded so much that now today we have around 440 private laboratories all over the country which are accredited by BIS. Okay. Apart from this, there are about 350 other government organizations laboratories like DRDO, CSIR, so all those government organizations, plus 10 hours. So roughly, as on now, we have around 800 laboratories all over the country which do testing. They do testing for BIS as well as they do independent testing also. But testing infrastructure, I would say, still need. Another one more thing. We also have a scheme whereby we are funding the testing infrastructure even in non-BIS laboratories. Like we have a national testing house, some of the IITs, CSIR kind national physical laboratories. And in fact, this we have also extended to the MSMEs. We have told MSMEs, and we are having regular interaction with the MSMEs, and MSME Rajkot cluster have actually come forward that हमने कहा MSME के जो भी clusters हैं वहाँ पे अगर कोई भी laboratory है जो वहाँ का industry association चलाता है या MSMEs चलाते हैं, criteria is only that it should be non-profit. अगर profit है तो भाई फिर हम नहीं fund करेंगे, लेकिन if it is a non-profit organization, any society or any association running it, then you give us the requirement, we will give you the money. So we 100% we will fund. So yeah, 800 जो labs हैं, testing labs हैं, is it enough है, काफ़ी है, और बनाना चाहिए, थोड़ा और expand करना चाहिए? ये क्या है ना, एक chicken and egg story है. अब लैब का या टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी आदमी तब तक नहीं लगाता जब तक एनएफ बिजनेस ना हो. अब आपने मान लीजिए गिलास टेस्ट करने का इक्विपमेंट तो लगा दिया, लेकिन अगर आपके पास कोई टेस्ट कराने ही नहीं आ रहा तो वो तो आपका बेकार है. अब ये टेस्ट कराने कोई जाता नहीं, इसलिए वो बोलता है कि टेस्टिंग लैब नहीं है. तो लैब पहले लगे या प्रोडक्ट पहले टेस्ट होने के लिए जाए, तो ये एक बड़ी डाइकोटोमी है एक तरह की. तो इसलिए जब गवर्नमेंट जैसे किसी भी प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड को मैंडेटरी करती है थ्रू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, तो इसीलिए टाइम देते हैं साल का, 6 महीने का, 1.5 साल का, कि भाई तब तक कम से कम टेस्टिंग उसका लग जाए. तो टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सपेंड होगा वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होगा, बिकॉज नाउ इट इज़ मोस्टली इन द प्राइवेट सेक्टर. देखिए पिछले साल हमने BIS के थ्रू, मतलब बाकी तो और प्राइवेट जो हुए होंगे वो हुए होंगे, लेकिन BIS के थ्रू लगभग 2.7 लाख सैंपल्स टेस्ट हुए. 2.7 लाख, हाँ. उसमें से केवल 1.3 लाख जो है वो BIS की लैब में हुए हैं, बाकी 1.4 लाख जो है वो प्राइवेट में हुए हैं. तो BIS लैब्स तो ऑलमोस्ट सैचुरेटेड हैं. अब उनमें ज़्यादा हम बढ़ा भी नहीं रहे हैं, जान के थोड़ा बहुत कुछ एडिशन करते रहते हैं, सम अपग्रेडेशन एक्सेट्रा,
But the idea is more to fund private sector and more in PPP kind of a mode, where it should be an economically viable activity. But there are new age projects that are coming. Solar, जैसे आपने mention किया, wafers है, PV cells है, तो उनके नए standards हैं, plus also they testing. How do you keep the pace with with the new projects that are coming in? हाँ, तो वो अब ये जैसे जैसे new requirements keep coming, so then we enhance those testing infrastructure in BIS lab also, and then we tell private people also कि भाई ये product आने वाला है, इसका आप टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू करो. और स्टैंडर्ड्स तो BIS बनाता है, उसमें तो कोई उनका रोल नहीं है. लेकिन स्टैंडर्ड देखिए सीक्वेंस क्या है, पहले स्टैंडर्ड बनता है, स्टैंडर्ड बनने के बाद फिर गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी करती है, और जब मैंडेटरी करती है तब उसकी टेस्टिंग चालू होती है. तो दिस इज हाउ इट गोज. तो स्टैंडर्ड तो पहले बन गया, लेकिन जब गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है वहां से सीढ़ी शुरू होती है कि अब टेस्टिंग की जरूरत है. What you are making, the other ministry may not be making. Yeah. How do you ensure? How do you bring that coordination around with all the concerned ministries and departments? You know, we have in about 45 ministries in last couple of years, we have through their intervention, we have set up their standardization cells in these ministries, so that in particular related to any particular ministry, if the particular ministry wants any standards to be made, for example, let us say MNRE, now non-renewable energy, lot of new things are coming, PV cells and batteries, and connectors and charging systems and better power storage systems and all that. So we have a regular interaction with these cells, and in BIS we make an annual plan of standardization with just before any financial year starts. So like 26-27 plan we had prepared about 2-3 months back. So we consult with all the ministries कि भाई what is your requirement, आप किन चीज़ों पे चाहते हो कि स्टैंडर्ड बने, तो उनके इनपुट्स हम रेगुलरली लेते रहते हैं. Most of the ministries in government of India don't have technical backup. Some ministries have like IT and MNRE etc., but most of the ministries don't have technical manpower at their back to support their policies and data and all that. So they take help from BIS. So BIS provides a pool of technical manpower also to most of the ministries in their work and in their performance. 140 करोड़ का भारतवर्ष AI ambitions के हिसाब से चल रहा है. But who decides what is ethical and what is not? AI के क्षेत्र में जैसा मैं आपको बताऊं कि BIS बहुत अच्छा काम कर रहा है, और ISO जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, IEC है, जहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनते हैं, वहाँ BIS ने लीड लेके AI के क्षेत्र में काफ़ी स्टैंडर्ड्स पब्लिश किए हैं. 32 स्टैंडर्ड्स AI के क्षेत्र में अभी तक हम लोग जो है वो ISO और IEC में बनवा के we have already adopted them. And there are 2-3 major standards like in the area of guidelines for AI systems, data analytics, which were made by India's proposal by the international organizations. And now the work is going on in many other areas, like how the data is generated out of generative AI, validation of AI systems, ethical standards, safety, and all these aspects पे इंडिया के proposals के basis पे international organizations में हम लोग काम कर रहे हैं. And एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जितने भी स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं या अडॉप्ट किए हैं AI से रिलेटेड, वो सारे जो मिनिस्ट्री ऑफ IT की AI रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, उनमें दे आर बीइंग यूज्ड. And we are closely working with the Ministry of IT in this area. And as you know that we recently India ने AI Impact Summit host किया था, जिसमें so many countries participated and BIS also participated. And we are very actively engaged with the other countries as well as the international organizations in developing standards for AI.
one caution is there. AI is an emerging technology, emerging area which have immense potential. There's no limits. True. So one of the challenges also that sometimes standards should not become limiting the technology. Right. तो वो दोनों चीज़ें हैं. एक तरफ उसमें उस पोटेंशियल को खुला रखना है ताकि आगे के डेवलपमेंट्स रुके ना, और ऑन द अदर हैंड सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, एथिकल इश्यूज हैं, पर्सनल प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज हैं. देयर आर इश्यूज जिनको कि सेफ गार्ड करना है. तो इट्स ए वेरी डेलिकेट एरिया फॉर द स्टैंडर्ड मेकिंग. But nevertheless, we are very actively engaged with the other countries as well as the international organizations. Is it the first of a kind that India is doing in terms of trying to define standards for AI, ethical and safe? Is it a first that our country is doing? No, we know, because AI is a technology which requires these kind of safeguards. Like in any product, for example, electrical product, electronic product, mechanical product, all products have some safety issues. Right. Like we have n number of standards which provide safety guidelines or safety issues. But AI being a soft, non-tangible kind of a technology where there are different kinds, those are also safety issues, but there are different kinds. So obviously it's a new area for the whole world, not only for India. So everyone is grappling with it, and even larger companies, Google and all those companies are also working on that, and we are also engaged in that. And it's definitely a very, very challenging area, I would say, for the standards making. And you would also be doing a lot of inter-country collaborations, talking on standards, taking their standards, giving some standards to them as well. Take us through the international. We have multilateral as well as bilateral engagement with many countries, like BRICS. Now this year India is chairing BRICS summit, so September you must have read. Right. There will be a leaders summit, and in BRICS also there is a group of heads of national standard bodies. Okay. So we have a meeting in July, where all the, like me and all the other heads of the BRICS countries of the standards bodies will be meeting, and we are working on an MOU between the BRICS countries to engage more meaningfully on the standards making, information exchange, training, capacity building, and facilitating trade and all those things. Bilaterally also we work with like Australia, South Africa and so many other countries. Our people keep going there, their experts keep coming. It's a learning process. Different countries have different structures. Some countries have their standard bodies under government domain, some countries have under private sector. There are different structures are there. But since work is same, we keep engaging with them. How is BIS shaping international standards? Is there indigenous standards that India has developed which are being adopted globally and appreciated worldwide as well? No, India is now contributing very, very actively in the international standards development. Like, some of the traditional sectors of India, like Ayurveda and yoga. On India's proposal in the ISO, there was a separate technical committee was set up on Ayurveda and yoga, and that committee's secretariat is with BIS. So this is a very, very important area for us, because Ayurveda and yoga is traditionally India's forte. And so similarly in textile sector, there are a couple of standards on the testing methods for color textiles, etc., which India had proposed, and those then they became the international standards. Similarly in spices, because spices is another stronghold of India. Historically, spices trade started from India and all that. So a lot of technical committees and standards in the fennel seeds and white and black pepper and all those spices, their testing method, their standards are proposed by India, and then the international technical committees are working on those proposals. Similarly, as I also told that AI, first this guidelines for AI system
This was also proposed by India, and then it became an international standard of ISO guidelines for AI systems. Similarly, there are other, like in the transport sector for LED display for the transport buses. This was one standard which India proposed, and then it became international standard. Let me tell you, as on now we are contributing to international standards in such a large extent that Indian experts have been nominated to about 600 technical committees of ISO and about 134 technical committees of IEC. So India now is not only standards taker or standards adopter, but also standard maker. And couple of years back, India didn't used to have even one secretariat of an international technical committee. Now today we have secretariats of about 14 ISO technical committees and one IEC technical committee. So we are very, very deeply engaged with the ISO and IEC on a standard making, and we are posing a lot of new items to these organizations for standard making. In fact, a lot of service sector areas are also being proposed. We have developed a standard for IoT for health. Okay. This blood pressure and sugar and all those, measuring how through internet these devices are connected for monitoring health. So that is another standard, which so there are a lot of interest, and people give a lot of credence to BIS and India for proposing new items and new standards. बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बहुत सारे नए नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, ओपन हो रहे हैं. On an annual basis, how many new standards would you be with BIS be coming up on an average in next 3-4 years, 5 years from now? Is there a level benchmark that you are setting for that? In last 2-3 years, we have been setting almost more than 2,000 standards per year. Per year. That's a huge number. That's So, almost like 10 standards per day. Yeah, but उसमें से पूरे नए नहीं होते हैं, because we also have to keep reviewing older standard. जो मैंने 10 साल पहले बना था, अब उसका टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, उसका पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया. तो हमारा रूल ये है कि हमें we should review every standard every 5 years. That's our guidelines. वो हम उतना इन्फोर्स कर नहीं पाते हैं, सारे नहीं हो पाते, बट ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हर 5 साल में स्टैंडर्ड रिव्यू हो. तो जो 2200 के करीब स्टैंडर्ड हम हर साल बनाते हैं, उसमें से लगभग आधे होते हैं, 1000 के करीब नए होते हैं और 1200 जो पुराने का रिवीजन होता है. और कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, जैसे अब बिल्कुल ही कोई ऑब्सोलीट हो गए. टाइपराइटर नहीं होता था पहले, अब वो यूज़ ही नहीं होता, पेजर से चले गए. हाँ, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो अब यूज़ नहीं है, तो कुछ ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आर्काइव कर देते हैं उनको. 2200 का 2200 का पेस चलता रहेगा. हाँ, 2000 से लेके और 2500 के बीच में लगभग हर साल स्टैंडर्ड बन रहे हैं, और मेरे को लगता है अभी और बढ़ ही सकता है, इसमें कम नहीं होगा. Garg sir, it was a pleasure speaking to you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much.